Okay, so hello everyone. A very good evening to all of you. Yes, good evening. Good evening, Brinda. Good evening, Amar. Yes, good evening to all of you. So let's start today's discussion. I- Yes, Numan, I'm fine. How are you? Yaksh, good evening. Vaishnavi, good evening. Yes, good evening, Ravi. Good evening to all of you. So today we are going to discuss around 4 to 5 topics. Some topics in detail, some topics briefly, with us keeping the exam requirement in demand. Yes. Uh, Protest survive fishing community opposing the construction of Vijayanagar port. Again, see, port में क्या होता है that there is a trawler. प्रोतेश का एक डाउट आया. See, when these big ships come to a port, they have the trawlers, the big things, and they brings lot of that eject water. उससे क्या होता है, जो फिश होती है आपकी, द फिश इट गेट डिस्टर्ब, जो वाका जो अपने इनके एग लेइंग एरियाज होते हैं, फर्दर इट इट डिस्टर्ब्स द इकोसिस्टम, बिकॉज जो फिशिंग बोट्स होती है दे आर स्मॉलर इन साइज, बट दीज लार्ज शिप्स दे डिस्ट्रॉय द होल इकोसिस्टम, एंड फर्दर दे ब्रिंग द this exhaustive water which they discharge in the generally large seas, but sometimes it also get leaked at the port area, so it creates a problem for these fishermen. And also there is an fees of accessibility, because once a port is created you have to pay a fees. So there are different issues, ecological issues, economical issues, issues of accessibility, right? So that will be covered in some time, not an issue, right? Voice कम आ रही है? Okay, let me check. Okay, I hope now it's fine. Okay, so the first, before starting the discussion of the news, let me ask a question to check that how many of you are following the news. So let's have the first question of the day. So there is a question. Just attempt this question. So our first news of the day is toys. Our first news is the toys. So attempt this question. I'm giving you 2 minutes. Just send your attempt this one. Attempt this question. Okay, Amar, Protest, sir, no idea. Okay. What about others? बाकी लोग? Okay, Vaishnavi is saying, I feel I have not gone through any of them. Okay, fine. यही सब यूपीएससी पूछ लेती है आर्ट एंड कल्चर में, right? It is part of your handicraft and it was in news. So for different reason it was in news. So I will come to that context, but let me see, is there anyone who will solve it? अच्छा, प्रोति सिंह एक बार भी नाम नहीं सुना सर. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. टुडे यू विल हियर दीज नेम्स. ओके, और कोई? और कोई? जनता जनार्दन. ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे यूपीएससी में, जो आप देखते हो ना, बाउंसर क्वेश्चन आ गया, कहाँ से आ गया, ऐसे ही आता है. तो ये बेनिफिट है क्लास का. दिस इज द बेनिफिट ऑफ द क्लास. यस.
ओके रवि सिंह मे बी बी, ऑप्शन बी। ठीक है, आते हैं इस पे। चलो, एक ने मे बी तो किया कम से कम गैस। ओके, बाकी लोग नो आइडिया सर। जागृति ओके, ठीक है। चलिए, सी दिस द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ आस्किंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दैट to sensitize all of you with respect to the kind of question being asked in the past few years, especially in art and culture, history, medieval history, and your ancient history, right? So even though we can read the standard sources, but again, what is the limit, what is the where we have to focus? So this kind of news gives us a chance that okay, these are the particular areas where we should focus, at least something is the news. So these all three toys are the GI tag. They all have received the GI tag. That's why I have picked up these three only. But now what I will discuss for the next 10 to 15 minutes, it is very important for prelims perspective as well as your mains perspective, right? So yes, Ashu, good evening. Yes. So most of you, means not most of you, some of you said that B should be there. Guesswork is there from your end, but it's not B actually. See, where are the color? I cannot see the color. Okay. So why this kind of thing? Okay, nevertheless. So the correct answer is only this one pair is correctly matched. Only one pair is correctly matched. So if you see this Channa Patna toys, it is a very famous toy, and Channa Patna is the name of a village or a town in the Karnataka region. There is Ramnagar area in Karnataka, right? Within that area, there is a Channapatnam village. From there, this art generated. There is another story behind this Channapatna toys, that it evolved during the reign of Tipu Sultan. So when Tipu Sultan was the ruler of Mysore, he promoted this art of, or you can say toy industry in the Mysore region. For this, he further employed the Persian artist to train Indian people. And with time, this art further refined. And nowadays, government of Karnataka, the Karnataka Handicraft Development Council, even the government of India, they are promoting these toys. Now, what is the recent context of discussing this particular news? That recently Ministry of Women and Child Development issued one of the guidelines that in the Anganwadi centers, these famous toys should be used at the smaller level for the small kids at the kindergarten level, or you can say at the primary level, especially at Anganwadi center, so as to make their learning easier, so that these people can connect with the themes. For example, if suppose you see Channapatna toys, let me first finish this one. So Kondapalli toys, it is in Andhra Pradesh, it is correct. There is another town, and these toys are based on the name of the towns. Similarly, Etukopakka, this is also in Andhra Pradesh. So Kerala is wrong, Tamil Nadu is wrong. So these two belong to Andhra Pradesh, and this Channapatna toys belong to your Karnataka, right? Now, let me first show you the image, because by looking at the image, you get a kind of feeling that what is the importance of these toys and how they play a significant role in MSME sector in promoting the traditional art of India. So let's have a look of toys. So this is Channapatna toys. This is Channapatna toys, right? So you can see the image. Okay, this is Channapatna. So you can see the beauty and the kind of fineness in these toys. Look at the finish, look at the kind of handicraft work has been done by the artist. Next is, this is Channapatna. This is Kodanpalli, right? This is Kodanpalli. And the last is Edupakka. So you can see the kind of fineness in the art. How beautifully, so this is, you can see the narration, a picture of Mahabharat, where Lord Krishna, just drawing the chariot, and here is the Arjun. So means again, this is one of the finest art. You can see the tradition.
and another one is this. This is your 80 Kopakka toys. So all three are GI tag, means these are the few image only. They have there can be different types of toys, and we all know. Now let's come to the thing that how UPSC can ask a question and how you should prepare this kind of theme. So toys. First of all, last year Pradhan Mantri Narendra Modi, right, Prime Minister, he discussed this thing in Man Ki Baat. In one of the Man Ki Baat, he mentioned this thing that toy industry in India has potential to generate or to create huge employment, right? Even in the past, and since we have a rich tradition of art in the manufacturing of toys, so India can develop as a manufacturing hub of toys. Right now, if I just share with you some stats, right now, the stats with respect to toys. So the global toy industry is around 100 billion US dollar. It is 100 billion US dollar, right? Whereas Indian share or India's market of toys is around 1.5 billion US dollar. So India has huge potential to make a strong area for itself in this international market. So domestic market is around 1.5, so it is quite low, right? Another thing is like oil, around 80% of the toys we import, 80% toys we import from the foreign nations. So 80% of the toys or Indian demands, the domestic demand is met by the import, right? So these are the basic stats. So you can see that there is huge potential to reduce the import. One thing, another thing, you can capture the international market. Right now, China is one of the dominating player, not just in India, even in the international arena. So as the current government is focusing on Make in India, so in the field of like we pushing in defense, like we pushing in other areas, in the similar fashion, the government is serious to push this toy manufacturing industry. India as a hub, right? And we have traditional art. As I just shown you few pictures, that traditionally some art is 400 years old, some art is 200 years old, some art is 500 years old. So we have a tradition. If I again go back to the ancient history, we all know, if some of you have read about this thing in history, that in the Harappan times, when an excavation was taken place, so various toys were discovered, terracotta toys, right? Various this clay cart from the Harappa, that dancing girl. So we have seen that even toys were famous in the ancient time also, right? And even today. And one more thing, that few days back, if you just followed the news, toy-cathon was organized, like hackathon, toy-cathon. How many of you read about this toy-cathon? How many of you read about this toy-cathon? कितने लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, toy-cathon के बारे में, right? So historically we have this context, and if you look at pan India, almost all the region, almost all the states have their rich tradition of toy making. Yes. So tell me. Yes. Good evening, universe. Yes, I can see after PIV you are here. Nice to see you. Yes. So yes, now answer my question. Toy-cathon. How many of you have read about this toy-cathon? So like hackathon, like your technological hackathon, toy-cathon was organized by the government to generate the ideas, to promote innovation, to promote creativity in toy making, electronic toys, other toys, even how this traditional toys can get a platform for the marketing, how you can serve it. Even if you go to Flipkart and Amazon, these toys which I just showed you, even if you go to any airport, for example, Bengaluru airport, if you visit Bengaluru airport, on the airport, at the side end of there are shops where these toys have been displayed. So government is also pushing them, right? Okay, yes, I have heard about it, Vaishnavi is saying, but how could not remember exactly right now. Okay, it's fine. So toy-cathon, like hackathon, like technical hackathon was arranged. आप लोग डिजिटल हैकेथन ना, डिजिटल हैकेथन भी कुछ समय पहले हुआ था, डिजिटल हैकेथन to promote technology. Similarly, toy-cathon. There is also another term for the economy called toyoconomy.
I will come to that toy economy. So again, this toy, if you can see that in the prelims, you can get a question like I asked you a few minutes back on the toys and the region. So in the prelims, what kind of questions can be asked, right? So in prelims, they can ask you the GI tag based toys who have received GI tag. They can ask you the region wise toys, region wise. For example, they will give you toys of Punjab, Rajasthan, southern India, like Andhra and this Karnataka or UP. Then they will ask you that which of the following are correctly matched. Okay. Or simply they can ask that which of the following toys have received GI tag. Okay. So all the three which I showed you, those were the GI tag. This is about the prelims. What else they can ask? They can ask a direct question in mains. In mains, they can ask about the significance of toy industry, how toy industry is important, how it can be significant for promoting art and culture, how it is significant for creating awareness about Indian culture, how it is significant for generating employment, at the same time how it is important to promote India as a toy making hub. So again, you can link it to different ways. So this thing we have seen region wise. Now what is the significant about these traditional toys? That they do not use any chemical. These GI tag toys do not use any chemical. The color they use, they are natural, because these toys are used for the children's, right? So a child is going to play with this kind of toys. So it is taken care of that no chemical, no toxic element is being used in its manufacturing. So at the same time, it is environmental in nature or environmental friendly. So these GI tag based, and there is a proper registry. Based on that registry, they received a certificate, and once they get the certification, yes, you have a traditional toys that are environmental friendly, and you have used natural dyes extracted from vegetables and the natural products like clay or something, then they are certified for the export as well. So all these things are there. So let us discuss about their significance. So how these toys are significant, how they are significant. So this kind of thing can be asked in mains. Okay, so in mains, how they are significant. So these are your toys. Then first of all, they promote your art and culture, right? So to highlight India's rich tradition of art, rich tradition of handicraft, to highlight rich tradition of art and culture. So it promotes India's culture at the global stage. Next, toy economy. So this is the term I was talking about, toy economy, right? So means it boosts the economics or economy based on toy. It can create a market for India. So as I told you, as I just shared the stat, that 80% of toys in India are being imported. So we can overcome these import, like we are doing in the oil, that we are reducing our oil demand from the international players, and we are trying to substitute it from domestic demand. Similarly, in this time, means in this toys also, we can reduce our reliance on imports. At the same time, if we promote Make in India, if we boost Make in India, then we can at the same time export as well. So it will have the balance of trade. So there is a issue, there is a point of balance of trade. You can do balance of trade here. Balance of trade. At the same time, you can generate forex for the nation. Apart from this, what do you see? So generation of employment. So employment generation. Employment generation. How it is significant to generate employment? How it is significant? Can anyone tell me how it is significant to generate employment? In what sense? In what sense it is significant? Tell me.
How it is significant to generate employment? Employment, in what sense it is going to generate employment, or it is helpful in generating employment? Tell me. Okay, simple. Another, let me ask this question in another way. Who all are involved in toys making? Who all are involved in toys making? Are engineers or doctors or high skilled people or lower skilled people? Who are all involved? And where is the maximum problem lies? The vulnerable section, the poor people who lack the technical skills. So this toy industry will give them a chance, because because these toys manufactured are mostly from the village areas, rural setting. And I just explained you that the name of these toys are based on the villages from where these art has been originated. So this handicraft, again, you need not require more money or credit for doing expansion, or for the sake of starting production. At the same time, you need not require so much skill, technical skill, some certification, some course, some graduation, nothing. With the existing, and these skills are, handed over from generation to generation. So in that way, this is a lower skill job, so MSME can be boosted. And we know that the burden of the government at the same time can be lowered, because in other areas you have to give a skill. Pradhan Mantri, that skill development program, right? Here, no such skill development. Only thing is you have to protect them, you have to nurture them, right? So that way, way it is significant that with minimal inputs, with less inputs, you can attain the goal. Are you getting or not? So in that way, it is significant, right? Yes, local craft industries. Yes, Numan, correct. Vaishnavi, handicraft industries are based on this. Yes, very good. Vladimir, yes, can create MSME sector. Exactly, nice. Lower class people, yes, Protus, exactly. Employment for rural people, yes. So in that way, it is significant. So even though if there is no direct question is being asked, you can mention this kind of example. You can mention this kind of initiatives, right? You can, okay. It could fulfill the dream of Gandhi traditional industry. Yes, exactly. Very correct. Yes, you can mention this kind of example. Yes, it will directly develop rural economy. Yes, exactly. So see, the divide of India versus Bharat, it can be bridged. So again, headache for the government will be less, and at the same time, you can promote India. And as we discussed in toy economy, you can bring forex for the nation. Right now, we are importing toys. And as you discussed, that Ministry of Women and Child Development is promoting this is a good initiative. That at the one side, it is good for the children. I am coming to that point. So this is about this employment generation. Another thing is, it is benefit in promoting the spirit of Ek Bharat, Shresth Bharat. So it will help to promote the feeling of promotion of Ek Bharat, Shresth Bharat. Ek Bharat, Shresth Bharat. How? That when these toys are promoted, for example, if suppose I am residing in UP, and if I am, suppose one of my siblings or someone plays with the toys of Karnataka, it means I am knowing my culture. If you just look these images back, you appreciate the art and culture. Like we people observe the Taj Mahal and appreciate its beauty, appreciate its grandeur. Same way, people can appreciate the very hard work, the kind of precision done by these people. So it means it can connect the country. It can bring people closer when the child plays that toy, because from the very early age, an affection, an emotion get connected with the setting. If you see, for example, a child of Delhi is playing with the toy of Karnataka region. So when he will grow up, when he will reach that region, he can emotionally connect his childhood memories that, okay, this was the thing. So that will bring regions closer. So in that way, it can lead to Ek Bharat, Shresth Bharat, right? So that is another
significant aspect of this. So if you explain in this way, it means if there is any surprising question comes, if you can use some example, as many of you have mentioned this thing, that you can lead it to Gandhian philosophy also, you can lead it to MSME sector also, you can give solution to the challenges faced by the rural economy, that how traditional art can lead to generation despite the growing competition with machine-based tool, machine-made toys or Chinese toys, right? So this is one thing. Now I am coming to the another aspect of this discussion of that how these toys are going to help the development of a child. How it is. So basically the Ministry of Women and Child Development, what they are planning, what there is thinking is that since a child learn more while observing the things, that okay, this is the toy, as we have seen. If suppose, if I just show you the image again, so here you see, if suppose somebody wants to teach a child about the story of Mahabharata, so anyone can show this image, that see, these are the horses, these horses are driven by the Lord Krishna, and again Lord Krishna is telling the Arjun that you should do this thing. If suppose we encourage any child about the study something, so this is your path, this is your karma, right? Similarly, if we show another picture, if suppose we pick any of the picture, that okay, this is a woman who is carrying a pot on her head, so we can show that how the woman has to travel different area, how your mother do the things. So again, these are the few glimpses. We can design different kind of toys with respect to the child's understanding, his mental stage. You can make counting numbers, you can show that how the 4 legs are there of a cow, how cow works. So we can create a story, we can connect that story with a toy, so that a child can play, at the same time he can or she can learn, right? So there is an understanding of learning, and at the same time you are generating a demand for these toys. So means from the one way, from one scheme, you are targeting 2 objectives. One is the enhancement or the growth and learning of a child. At the same time, you are promoting the development of the rural areas through generating demand of these toys. So artisans will get a chance to design another kind of thing. At the same time, you promote the creativity in the education curriculum. So you are making the learning is quite healthy as well as easy to understand or easy to link with daily life. Okay, so this is the objective of the ministry also, and this is the context that how the promotion of these toys in the Anganwadi centers at the primary level, it will build up the teamwork, it will build up the further enhance the education of the child at the starting level without stressing the child with lot of books and all these things. So reduce the burdening on the child, right? So this is about the first news of toys, right? So you can anyway use in any of the way. Right? Next news is about, so for the next news again, I will ask you only, then you will tell me. So why this Vada Kupattu? This Vada Kupattu is in news. Any idea why this Vada Kupattu in news? क्यों ये न्यूज में था वडा कुपट्टू? Anyone? कंटेक्स्ट क्या है इस न्यूज का? सुना है ये टर्म पिछले 1 हफ्ते में? Yet it empowers women in rural areas. Yes, योगेश सही है. अब इस पे आओ चलो. वडा कुपट्टू. Why it was in news? So today most of the news are of art and culture. तो आपको एक आइडिया तो लगी गया होगा. वडा कुपट्टू. वडा कुपट्टू नाम भी अजीब. वडा कुपट्टू. वडा. Yes, tell me. याद करो, ये टर्म आपकी आंखों के सामने से गुजरा है क्या पिछले कुछ दिनों में? सब लोगों के, अच्छा लोगों के कारण दिखाई नहीं दे रहा है. ओके ओके, लेट मी राइट. आई एम आस्किंग अबाउट
वडा कुपट्टू। अब बताओ चलो इसके बारे में, वडा कुपट्टू, ये टर्म, ये नाम कहाँ देखा है, किस कंटेक्स्ट में देखा है, कहाँ देखा है, किस कंटेक्स्ट में देखा है? सर इंस्टीट्यूट का, हाँ नहीं चलो इंस्टीट्यूट का लोगो भी हटा दिया है, यस आई गॉट इट, यस ठीक है, ओके नाउ इट्स फाइन, नाउ इट्स फाइन, यस टेल मी। अब लोगो हट गया, अभी बताओ, अभी कोई बहाना नहीं है, ठीक है बताओ चलो। पता तो चले कि कौन कितना पेपर को अच्छे से छानता है, अच्छे से पढ़ता है। बताइए, इतनी देर में तो जवाब आना चाहिए, किस कंटेक्स्ट में देखा है, कहाँ देखा है? कुछ तो बताओ, यस नो यस नो। सर देखा था, नहीं देखा था, सुना था, नहीं सुना था? नहीं पता सर, अच्छा वृंदा, नहीं सुना सर। अच्छा चलिए अभी सर सुनाएंगे आप लोगों को। वैष्णवी सिंह, ये भी मिस हो गया सर। हाँ यही बात है, देखो यही होता है ना, यूपीएससी में जब हम लोग पेपर देखते हैं तो बोलते हैं ये कहाँ से आ गया, ये तो एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है, ये तो किताब में भी दिया, लेकिन ये होता है, इसीलिए ये करंट अफेयर्स प्रोग्राम ही है कि आप लोग जो मिस कर दें वो हम पकड़ लें, है ना? ओके, सो योगेश, कल्चर की न्यूज़ तो ऐसे ही निकल जाती है, हाँ ये तो है, इसीलिए तो यूपीएससी जानती है। हाँ मोहित ने भी जवाब दिया है, यस एएसआई, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। हाँ तो बताओ मोहित, थोड़ा बहुत इसके बारे में। यस, चलिए कोई बात नहीं, आई एम टेलिंग यू दिस वडा कुपट्टू, it is a site which was previously also unearthed by ASI, but there is a location, it is near Chennai, चेन्नई से कुछ किलोमीटर दूर है ये रीजन। The what is the good thing about this region with respect to the culture, with respect to the to knowing about the our past civilization, that one of the excavation, during one of the recent excavation, four different layers of different civilization unearthed at one region, एक ही जगह पर चार अलग अलग सिविलाइजेशन, अलग टाइम पीरियड की चीजें अनअर्थ, लेयर्स, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, देन फोर्थ लेयर, वी विल डिस्कस देम वन बाय वन, बट दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट बिकॉज दे कैन आस्क सिमिलर काइंड ऑफ थिंग इन द एग्जाम, आपसे पूछ देंगे ये क्या है, किससे कनेक्टेड है, और आप सोचोगे कुछ तुक्का मार के आ जाओगे, राइट? सो दैट इज देयर। अच्छा, आशीष सिंह सर मुझे तो ये वर्ड ही नहीं दिखा कहीं, कोई बात नहीं, हम दोनों चीज पर फॉलो कर रहे हैं, फिर भी मिस हो गई, देखो कोई बात नहीं, हो जाता है, देखिए ये मिस हो जाता है, मैं भी अगर स्टूडेंट रहूंगा आपकी जगह तो मैं भी मिस कर दूंगा, बट यस अभी इधर ही यही एक्सपीरियंस काम आता है, सो नॉट एन इश्यू। सो फर्स्ट लेट मी शो यू फ्यू थिंग्स। ओके, थिंग तो वहीं पे ही थी, हाँ, तो ये था न्यूज़, आई होप न्यूज़ आप लोगों को दिख रहा होगा। So this fourth civilization, this is the news piece of the newspaper, credit to Times of India, right? So first thing is at this particular site there was early and later Pallava period। अब देखिए आप लोगों का मिस क्यों हो गया, ये चीज आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, राइट? और टाइम्स ऑफ इंडिया जनरली हम लोग पढ़ते नहीं है, हम लोग पढ़ते हैं हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, सो हिंदू डिड नॉट कवर दिस थिंग इन डिटेल, और इफ कवर एट ऑल तो यहीं से लियो, बट ओरिजिनली इट वाज कवर्ड बाय टाइम्स ऑफ इंडिया, राइट? So this early and later Pallava period from 1200 years to 1800 years ago। So ये जो साइट है यहाँ पे, जैसे मैंने कहा, चार अलग अलग जो जनरेशन है या चार अलग अलग टाइम पीरियड है, उस टाइम के आर्टिफैक्ट्स मिले। सिग्निफिकेंट क्या है, 12,000 ईयर्स पुराना हमें मीसोलिथिक के टूल्स मिले हैं, राइट? सो आई विल डिस्कस दैट मीसोलिथिक पीरियड की कुछ स्पेशलिटीज, दैट हाउ इट इज देयर, बट जस्ट लुक एट दिस इमेज। सो पल्लवा पीरियड का हमें मिला, क्या मिला, विष्णु शिवलिंग के स्कल्पचर्स मिले हमको, राइट? एक हाफ अर्थ मैंने विष्णु जी की हमें मूर्ति मिली जो आदि अंदर थी, आदि भाग जब
एक्सकेवेट किया गया, एंड दिस एक्सकेवेशन फाउंड सम 75 सेंटीमीटर बिलो. आपको 75 याद ही रखना है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया. सो मीन्स ज़्यादा डीप नहीं था, 75 सेंटीमीटर खोदने पे ही ये चीज़ मिल गई, फर्स्ट लेयर. देन संगम एरा, आई विल गिव यू रफ आइडिया अबाउट दिस संगम एरा. संगम एरा में ये पता चला कि ड्यूरिंग संगम टाइम दे हैड ट्रेड रिलेशन विद रोमन एम्पायर, क्योंकि रोमन एम्पायर के टाइम का रोमन एम्फोरा शर्ट मिला. इस टाइप से आपके गोल्ड ऑर्नामेंट्स जो रोमन कल्चर से लिंक्ड होते हैं. उसके अलावा टेराकोटा, टॉयज, बीड्स, ये सब भी मिला, बैंगल्स, राइट. तो ये तो मिलता रहता है, इतना याद नहीं रखना कि क्या मिला, बट किस टाइम पीरियड, किस सिविलाइजेशन से रिलेटेड मिला है वो याद रखना है. तो यहाँ पे पहली लेयर थी वो पल्लवा की थी, दूसरा संगम, उसके बाद मीसोलिथिक पीरियड. तो दो लेयर आपकी खाली पल्लवा की हैं, फ्रॉम 1200 टू 1800. मीन्स पल्लवा डायनेस्टी से लिंक्ड ही टू अलग जो आपको जो मिले हैं एविडेंस फ्रॉम द सेम डायनेस्टी. द मेन थिंग इज दिस मीसोलिथिक पीरियड का जो मिला है 12,000 ईयर, 12,000 years. So it is quite surprising that excavation we got something 12,000 year old. The time period is significant. So if I talk about Mesolithic period, so Mesolithic period is famous for its tools, microlith जिनको बोलते हैं. The if you see the Mesolithic is act as a transition phase between Paleolithic and Neolithic, right? So एक इमेज में आपको और दिखा दूं, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं. लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. सो यू कैन सी, आपको अगर यहाँ पे कुछ दिख रहा हो, सो दिस फर्स्ट लेयर पल्लवा एरास की, उसके बीच में संगम, दिस इज संगम टाइम excavation, means this is depicting the Sangam layer, and this the ground, the near ground, this is showing the this ground region, this is your Mesolithic. So at the very bottom, and it's quite commonsensical that the thing which is at the deeper level, that will be the oldest, and the thing which is at the top level, that will be the newest one. So this is Mesolithic, Sangam in between, this is Sangam, and at the top layer you have this Pallava, right? So this is about the excavation site. You can see a picture at how the people are doing the excavation. So different layers have been found. Now let's come to the discussion that how this is significant, what you need to revise from this kind of news. So first is Mesolithic. Okay. Okay, yes. So first is Mesolithic. So if you have not gone through the Mesolithic, Paleolithic, Neolithic, so I'm just giving a brief idea. So this is Mesolithic, this is Paleolithic, and again within this Paleolithic, different phases are there, and then a Neolithic. So this is a transition phase. So we need not to much worry about the actual ages, because at different areas different ages have been depicted. कहीं बोलते हैं कि Mesolithic age 9,000 to 2,000 year BC में था, कहीं 15,000 BC to 5,000 BC. So this, but since we received this artifact excavated 12,000 year ago, so roughly it is from 12,000 around to 2000 BC. यहाँ तक चलता है. इवन देर इज ओवरलैपिंग, एग्जैक्ट टाइमलाइन नहीं है कि यहाँ पे मीसोलिथिक शुरू हुआ, यहाँ पे न्यूलिथिक शुरू हुआ, या यहाँ पे पैलियोलिथिक खत्म हुआ. एग्जैक्ट नहीं है. देर इज ओवरलैपिंग ऑफ टाइम पीरियड, कि जब ये एंड हो रहा है तो ये शुरू होना शुरू हो गया, जब ये एंड होना खत्म हुआ तो ये शुरू होना शुरू हो गया, राइट. नाउ हाउ दीज आर इंटरेस्टिंग. दिस मीसोलिथिक इज फेमस फॉर द माइक्रोलिथ टूल्स. सो दीज different periods, they are differentiated in terms of the types of tool and types of activity done by the people. So here mainly hunter and gatherer at this phase, and tools are larger size. So tools were the larger size. यहाँ पे जो tools थे larger size के थे, ऐसे बड़े बड़े पत्थर लेके मतलब hunting करते थे, and activity जो मिली थी hunting and gathering, right? Activity hunting and gathering. I'm just giving a brief idea. Hunting and gathering.
But here in this case, Mesolithic, this is also known as microlith age. Microlith age, right? So this is, lith means stone, right? Rock. So micro means the size of the tools now start reducing. So here large boulder size, large size of tools or large size stone tools were used. Here size is reduced to micro, means from few centimeter to few centimeter, means up to 2 to 3 centimeter to 6 centimeter, 7 centimeter. So sharpen. So tools become sharp from this phase to this phase. And the man started now settling at the later phase. Means जब last का time आएगा, the moment we entering from Meso to Neo, people starting practicing agriculture and start domesticating animals. शुरू हो चुका था, right? बट प्रॉपर तरीके से एग्रीकल्चर, प्रॉपर तरह से सेटलमेंट जो है वो आपका न्यूलिथिक में होगा. प्रॉपर सेटल लाइफ इन दिस फेज, बट स्टार्टिंग यहाँ हो चुकी है लास्ट फेज में. सो स्टार्टिंग में नहीं हो रही है, बट द टाइम न्यूलिथिक स्टार्ट्स एंडिंग एंड न्यूलिथिक इज अबाउट टू स्टार्ट, दैट सेटल्ड लाइफ हैज स्टार्टेड. तो पहले हंटर गैदरर थे, यहाँ पे मैक्सिमम टाइम हंटर गैदरर रहेंगे, बट एट द लास्ट दे स्टार्ट getting settled in some parts of the India, in some part of UP, in some part of your Madhya Pradesh, and in some region, the evidence of this agriculture activities were found in Mesolithic. तो आप कैसे आदमगढ़ हो गया, आपका जो मांडो चौपान जो रीजन है या यूपी का, right? All these are the sites of famous sites of ऐसे Langnaj in Gujarat. These are certain famous sites. So as a homework, you have to visit the important Mesolithic sites in India. मैं इस फॉलो में दे सकता है लंगनाज, राइट, आदमगढ़, भीमबेटका. ये तो भीमबेटका तो फेमस है, वो तो तीनों ही कॉमन है, बट कुछ कुछ साइट है, राइट, जो कि आपकी मीसोलिथिक में है. सो यू हैव टू लुक एट दीज साइट्स एंड अबाउट दीज स्पेशल फीचर. एज आई टोल्ड यू, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट को कि एग्रीकल्चर कहाँ स्टार्ट हुआ था. तो स्टार्ट यहीं हो चुका था, बट प्रॉपर तरीके से इवॉल्व कहाँ हुआ, वो यहाँ पे हुआ, राइट. सो दीज थिंग्स यू विल रीड. सो एक मीसोलिथिक पे ध्यान देना है कि व्हाट इज द स्पेशल अबाउट दिस मीसोलिथिक, राइट. सो माइक्रोलिथ टूल्स वर देयर, सो दीज टूल्स वर फाउंड इन दिस एक्सकेवेशन ऑल्सो. नेक्स्ट थिंग इज द संगम लिटरेचर. और इसमें क्या मेंशन किया गया है संगम लिटरेचर का. सो ब्रीफ आइडिया अबाउट टू यू पीपल अबाउट संगम लिटरेचर और संगम एज, बेसिकली नॉट लिटरेचर, संगम एज. तो संगम एज, देर इज अगेन अ डिस्प्यूट अमंग द स्कॉलर्स कि ये एज का एग्जैक्ट टाइम पीरियड क्या है, ये एज कब एग्जैक्टली चालू हुई. कुछ लोग बोलते हैं बहुत पहले से है, सिंस सिविलाइजेशन स्टार्टेड, बट एज अ जनरल कंसेंसस अमंग द मैक्सिमम स्कॉलर्स यू कैन टेक इट एज 3rd century BC, 3rd century BC to 3rd century AD, 3rd century AD. So what this Sangam actually means? Sangam actually means the union or the assembly of the scholars, Tamil scholars, mainly poets, experts, the writers, authors. So this Sangam age was the age when these Tamil poets, scholars, they start aggregating at one place, right? So that union or that meeting is called as Sangam, right? And then it started around, and this Sangam is held in 3 phases. जैसे हम बुद्धिस्ट पढ़ते हैं कि बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, same way 3 Sangams were there. Now I have a question that under which dynasty of whose patronage this Sangam was there? This Sangam assemblies or this Sangam age or these authors were patronaged by which dynasty? Any idea? कौन था इनको प्रमोट करने वाला? Any idea? Okay, sustainability say I am Pranjal. अच्छा. हाँ जी. So any idea? पढ़ा है किसी ने भी ये कल्चर में? कल्चर में? अच्छा नहीं पढ़ा तो टफ है ना. चलो जब नहीं पता होता तो फिर तो मे बी this is the patronage provided by the Pandyan kings. It was the Pandyan kings who provided the patronage.
पांड्यन किंग्स, ठीक है ना, इट वर द पांड्यन किंग्स हु प्रोवाइडेड द पैट्रोनेज। अच्छा, अभी वैष्णवी सिंह कल्चर नहीं पढ़ा, बाकी सब कह रहे हैं चोला, चेरा एंड पांड्या, आई थिंक पांड्या, yes, Pandya's kings were there. So basically what we need to remember, एग्जैक्ट क्या किंग का नाम है वो सब याद नहीं रखा। यस, ड्यूरिंग द रेन ऑफ पांड्यन किंग्स इट वाज पैट्रोनाइज्ड, थ्री असेंबलीज वर देयर, फर्स्ट थ्री असेंबलीज वर देयर, थ्री संगम असेंबलीज वर देयर, थ्री संगम असेंबलीज, इनके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं वो लिख लो, बाकी आप जब डिटेल में पढ़ोगे संगम एज, बिकॉज संगम एज इज as a particular topic in UPSC syllabus, right? So we have to play important this attention towards this topic. But yes, briefly I am discussing here because this thing was mentioned there in that excavation. So three assemblies. First assembly जो इसकी हुई थी, first assembly वो मदुरई में हुई थी। फर्स्ट असेंबली और फर्स्ट संगम जो हुई थी आपकी मदुरई में। डेट एग्जैक्टली नहीं पता है इसकी कि डेट किस में हुई थी, एग्जैक्ट डेट नहीं फिगर आउट की है, राइट, बट बीसी में हुई थी। सेकंड असेंबली आपकी, सेकंड असेंबली जो है आपकी वो एक विलेज है कपाड़पुरम, कपाड़पुरम, कपाड़पुरम। इसकी खास बात क्या है कि ये जो आपकी असेंबली थी, देयर वाज नो एविडेंस सर्वाइव्ड। जो भी लिटरेचर कंपाइल्ड हुआ होगा, जो भी उनका डिस्कशन हुआ होगा, वी हैव नो एविडेंस as a survival evidence, means everything was just damaged with time, so there is no surviving evidence, so no surviving evidence, no surviving evidence। इसका बहुत फेमस एविडेंस है तोलका पीएम। आई होप कुछ लोगों ने नाम सुना होगा तोलका पीएम का, तोलका पीएम। एक पी और बढ़ा दो इसमें, तोलका पीएम, तोलका पीएम मीन्स तमिल ग्रामर, तमिल ग्रामर, वेरी फेमस वर्क। सो दैट इज द ओनली सर्वाइवल वर्क ऑफ दिस संगम एज। तो जो सेकंड वाली आपकी असेंबली हुई थी उसमें भी कुछ नहीं बचा एक्सेप्ट दिस तोलका पीएम, दैट इज तमिल ग्रामर वर्क, दैट इज तमिल ग्रामर। तमिल ग्रामर। नाउ द थर्ड असेंबली, जिसमें जिससे सबसे ज्यादा एविडेंस मिले, सबसे ज्यादा जो जानकारी मिली तमिल जो कल्चर है, तमिल जो लिटरेचर है। वन मोर थिंग, दिस इंफॉर्मेशन और दिस संगम एज इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू इंडिया, it also covered parts of Sri Lanka also, right? So there is a mention of Sri Lanka as well, right? So this thing, and again in different inscription of different Indian rulers, this Sangam age is there, means in Ashokan inscriptions there was a this explanation or mention of Sangam age things about Cheras, Pandyas, what they did this during this time. Kharvela king, in the inscription of Kharvelas this thing is mentioned. So not just these sources, even the sources of other surrounding dynasties, they also talked about the Sangam age, that what was the polity, what kind of society was there. So all these things you will cover in detail when you will read it in the culture, but here I am giving a brief idea. So the third assembly, in the third assembly, and again it is held in Madurai. तो आपको बहुत ज़्यादा सिटी याद रखने की जरूरत नहीं है, मदुरई बस कपाड़पुरम इन बिटवीन। सो दिस इज द मेन असेंबली विच हुज सोर्सेज आर मोस्टली सर्वाइव्ड। अब इसमें भी जो इसके मेजर जो कलेक्शन है, मेजर वर्क जो हैं, उनको हम बोलते हैं एटू टोगई। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप अभी रटने की कोशिश मत करना, जब पढ़ोगे इसको तब रट लेना, राइट? सो इट इज एटू टोगई। इसमें क्या क्या था? एटू टोगई, इसका मतलब होता है 8 इंपॉर्टेंट वर्ड्स, 8 मेजर वर्ड्स। एटू मीन्स 8, ठीक। और क्या था इसमें? इसमें एक है पटुपट्टा, एक और इसमें जो कलेक्शन है उसको बोलते हैं पटु, राइट? पटुपट्टा, इट मीन्स 10 songs, 10 songs, right? It is about 10 songs. इसके बाद एक माइनर वर्क है
माइनर वर्क जिसको बोलते हैं, मीन्स ऑल दीज नेम्स यू नीड नॉट टू remember, means you should have an idea, not exactly you have to cram them, and that is patti, nenkilan, nenkil, kannaku. Patti, nen, kil, kannaku. Kil, kannaku. This is a work on ethics, right? This is a work on ethics. It contains 18 minor work. So this is 18 minor work. 18 minor work which comprises of ethical work, ethics and morality, ethics and morality. And famous example, एक famous example आप लोगों ने सुना होगा, एक famous example इसका है काफी, तिरुकुरल. famous one of the famous work is तिरुकुरल. सुना है कि नहीं सुना है तिरुकुरल? तिरुकुरल किसने सुना है? तिरुकुरल आता रहता है न्यूज में. यस यस, गुड इवनिंग आरती. तिरुकुरल सुना है किसी ने? हु इज दिस ऑथर ऑफ दिस तिरुकुरल? नाम क्या है इनके ऑथर का? फेमस पर्सन, वेरी फेमस पर्सनैलिटी. And this circular was compiled very early. Yes or no? कितने ने सुना है इसका नाम? Yes or no? Tell me. थिरुवल्लुवर का नाम सुना? थिरुवल्लुवर, संत थिरुवल्लुवर, संत थिरुवल्लुवर, वेरी फेमस. उन्हीं के नाम पे थिरुकुरल, थिरुवल्लुवर, उन्होंने इसको लिखा है थिरुवल्लुवर. पढ़ना इसको, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, राइट? थिरुवल्लुवर, थिरुवल्लुवर को पढ़ लेना, राइट? काफी इंपॉर्टेंट है. एंड यस, अगेन यू हैव टू कवर दिस संगम एज इन डिटेल, क्योंकि ये काफी फेमस है, यूपीएससी में क्वेश्चन आते रहते हैं. एक और इसका एग्जाम्पल है, अगर आप उसका देखोगे, सिलप्पादिक्रम. किसने पढ़ा है? जिसमें कोवलन और माधुरी की लव स्टोरी का जिक्र है, वो भी इसी का पार्ट है. मीन इसके अलावा जो और लिटरेचर हैं, राइट? ये तो हो गया आपके 3 मेजर. इफ आई टॉक अबाउट दीज आर द 3 मेजर वन, मीन्स यहाँ पे कैटेगराइजेशन किया गया है. इसके अलावा और भी लिटरेचर है, जैसे मैंने बोला सिलप्पादिक्रम ना, जो इलांगो अधिगल ने लिखी थी, द लव स्टोरी ऑफ दिस कोवलन एंड माधुरी. उसके बाद एक और है, ऐसे कुल मिला के 4-5 और ऐसे लिटरेचर हैं जो इंपॉर्टेंट लिटरेचर. सो यू शुड हैव आइडिया अबाउट देम, राइट? एंड डोंट वरी, आई विल मेंशन इन द नोट्स आल्सो. अगर नहीं अभी आपने पढ़ा तो मैं एक आइडिया के लिए जो आपको नोट्स मिलेगा ना इसके बाद, उसमें मैं मेंशन कर दूंगा, ठीक है? राइट? वृंदा, हाँ सर ठीक है. रवि, आज पहली बार सुना है सर. चलो कोई बात नहीं, सुन तो लिया कम से कम, है ना? क्लास करने से कुछ तो फायदा हुआ. यक्ष दिवाकर, नो सर नो सर, कोई बात नहीं. वैष्णवी, सुना ही है बस सर, लगता है आधा कुछ भी नहीं है इसके बारे में. कोई बात नहीं, हर चीज़ धीमे धीमे होती है. ये सब नोट डाउन करते जाओ, जिसको जो नहीं पता है उसको होमवर्क भी लेते जाओ, ठीक है? उसको करना है, ऐसा नहीं कि खाली बस बता दिया और हो गया. इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़नी है. आई एम जस्ट हिंटिंग यू कि क्या क्या और देखना है आप लोगों को, ठीक है? सो दिस इज अबाउट द आर्ट एंड कल्चर न्यूज़. बाकी न्यूज़ नेक्स्ट में देखेंगे. अब कुछ और न्यूज़ कवर करते हैं. एक जनरल क्वेश्चन है आप लोगों से. एक एक्सरसाइज है ककाडू. कितने लोगों ने इस एक्सरसाइज के बारे में सुना है? आई हैव अनदर क्वेश्चन. एक्सरसाइज ककाडू किन नेशन के बीच में हुई है ये एक्सरसाइज? ककाडू. दिस एक्सरसाइज इज, यस योगेश, जब जागो तभी सवेरा, बिल्कुल सही. आशीष सिंह, आज सारे वर्ड्स न्यू है. कोई बात नहीं, आज सारे वर्ड्स न्यू है. इसके बाद अब आपको सब पुराना लगेगा. अब इसको बताओ, चलो. एक्सरसाइज ककाडू कौन सी कंट्रीज को होस्ट करती है? विच कंट्री होस्ट दिस एक्सरसाइज? क्या एक्सरसाइज है ये?
बताइए जी। इंडो श्रीलंका नहीं, इंडो श्रीलंका नहीं है, इंडो श्रीलंका नहीं है। मे टाइम एक्सरसाइज ठीक है, कहाँ किसकी है कुछ बताओ। मे टाइम तो है लेकिन मे टाइम इतना बड़ा है, कौन सी कंट्री क्या। हाँ वैष्णवी ने सही आंसर दिया, सही है, बहुत बढ़िया। चलो। और और yes Vrinda, correct. So this is the exercise between means this exercise is being conducted by, it is being conducted by Australia, right? So host country कौन रहता है, ऑस्ट्रेलिया, conducted by ऑस्ट्रेलिया, right? And many navies participate, so around navies of 14 countries. It is not a bilateral exercise, it is multilateral exercise. So navies of 14 countries participated in this exercise including India, right? So India was also the party. So this is just to check कि हाँ आपने देखा कि नहीं देखा। चलो बढ़िया, कन्याओं ने देखा है, वेरी गुड, नाइस। अब इसके बाद एक न्यूज़ डिस्कस करते हैं, सिंस अभी 24 सितंबर निकला। सो ऑन 24 सितंबर पूना पैक्ट वाज साइंड, राइट? पूना पैक्ट वाज साइंड ऑन 24 September 1932. So we can discuss this year 90 years completed. So even though it is not 100 years, but still UPSC may ask, right? And two things are there. So next is we are discussing about the Puna Pact and Harijan Sevak Sangh, and Harijan सेवक संघ। इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कुछ साल पहले इन 2019 प्रीलिम्स। इन 2019 प्रीलिम्स यूपीएससी आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन दिस, मतलब पूरा एंटायरली इस पे नहीं था, बट इसको अगर किसी को पता था तो उससे ऑप्शन एलिमिनेट करके आप आंसर पता कर सकते थे। सो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ दिस हरिजन सेवक संघ? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ दिस हरिजन सेवक संघ, बिकॉज दिस इज ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड इन सेप्टेम्बर मंथ। इसका और क्या नाम है दूसरा? व्हाट इज अदर नेम ऑफ दिस हरिजन सेवक संघ? एनीवन आइडिया? हिस्ट्री नहीं पढ़ी तो फिर दिक्कत है, चलो बता देता हूँ। सो दिस अदर नेम इज इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। इट्स अदर नेम इज ऑल इंडिया, ऑल इंडिया एंटी एंटी अनटचेबिलिटी लीग, अनटचेबिलिटी लीग, and it was founded by Mahatma Gandhi League, and its founder was MKG. MKG. Its founder was MKG. So this question was asked an statement, which of the following statement are correctly matched? One of the statement was this: All India Anti-Touchability League was founded by MKG, Mahatma Gandhi, right? So it was asked in 2019. So this kind of thing sometimes picked up. Now, this anti-untouchability league was formed in the background of this Puna Pact. This Puna Pact. So just let me know how many of you have read about this Puna Pact, except those who attended my class in of history. How many of you know about this Puna Pact? Yes, बताइए जी, बताइए। पूना पैक्ट, अच्छा ठीक है, वेरी गुड।
सो अगेन मीन्स ब्रीफली मैं आपको आइडिया देता हूँ जिन लोगों ने भी नहीं पढ़ा, द पीपल हु हैव नॉट रेड दिस थिंग सो फार. सो पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन नॉट गांधी, it was signed between this Ambedkar and Madan Mohan Malviya. Madan Mohan Malviya represented Gandhi. When this pact was signed, Gandhi उस समय यरवड़ा जेल में थे. कई लोग लिख देते हैं सीधे गांधी और अंबेडकर. It was between the representative of Gandhi and Ambedkar. Madan Mohan Malviya was representing Gandhi ji, and at this point of time, Gandhi ji was in the jail, Yerwada jail, because he launched earlier salt satyagraha, civil disobedience movement. Because of that, he was in the jail. Right? So but in the third round table conference was held. आप ये सब हिस्ट्री में पढ़ोगे जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है. So that during this second round table conference, when Gandhiji was allowed to attend it, he was released and again he was arrested after that to continue the civil disobedience movement. So that Ramsay MacDonald, the prime minister of that time of this Britain, he came out with this communal award, and he was giving the separate electorate to depressed classes as well. And Gandhiji was shocked. Gandhiji ने कहा ये क्या अनर्थ कर रहे हो? You are trying to divide Hindu society. पहले ठीक है मुस्लिम्स को दे दिया, बाद में सिखों को दे दिया और एंग्लो इंडियंस वुमेन सबको दे रहे हो. But what about this? Now you are dividing, you are creating a different section within the Hindu community. So this policy of divided rule I will not accept. So to protest that thing, he went on to fast unto death, indefinite strike, hunger strike. He was set on an indefinite hunger strike, and he was in Yerwada jail. So on behalf of Gandhiji, these Hindu nationalist leaders like Madan Mohan Malviya and others, they approached the Gandhiji and they asked the Gandhi, Gandhi ये क्या कर रहे हो आप? अपनी लाइफ क्यों दाव पे लगा रहे हो? गांधी से नहीं, I want to change the very attitude of the higher caste people of the Hindu society, that they should treat these untouchables as the Harijan, the child of God. So there should be a change in attitude. Otherwise, I will not, break this fast. So he just means this Madan Mohan Malviya approached Ambedkar कि Ambedkar जी मान जाओ, गांधी जी बैठ चुके हैं धरने पे, कुछ तो देख लो. So Ambedkar said कि यार ये गांधी जी ने फिर से क्या भी इमोशनल ड्रामा कर दिया. I was asking for the separate electorate and we are getting. फिर सो गांधी सेट कि ठीक है आपको जो कम्युनल इलेक्टोरेट में मिल रहा है, राइट, हम उससे ज़्यादा आपको देंगे, लेकिन डिवीजन नहीं चाहिए. हम वहाँ पे आपको जितना सीट मिल रहा है उससे ज़्यादा सीट हम देंगे, वहाँ पे आपको जो रिजर्वेशन मिल रहा है उससे ज़्यादा रिजर्वेशन हम देंगे, बट यू शुड नॉट एक्सेप्ट दैट ऑफर. Ambedkar said okay. So Madan Mohan Malviya and Ambedkar signed this Puna Pact, and Madan Mohan Malviya was representing Gandhiji. This was the whole story. So when he came out of the jail, first thing what he did was he established this Harijan Sevak Sangh, or that is called All India Anti-Untouchability League. Means he started his constructive work. He worked for the next 3 to 4 years for the upliftment of Harijans. And for this he also started a weekly called Harijan. एक न्यूज़पेपर भी उन्होंने स्टार्ट किया. एंड इफ यू सी द हेडक्वार्टर ऑफ दिस हरिजन सेवक संघ इज इन दिल्ली, किंग्सवे कैंप. जब दिल्ली विश्वविद्यालय से आप आगे जाते हो जीटीबी नगर, वहाँ पे किंग्सवे कैंप पड़ेगा, वहीं पे उनका गांधी आश्रम भी है. एट दिस आश्रम गांधी जी एंड कस्तूरबा गांधी स्पेंट अराउंड 180 डेज. और आपने कभी सुना होगा कस्तूरबा गांधी कन्या विद्यालय, आपने सुना हो, वो इन्होंने ही एस्टेब्लिश किया था. मीन्स देयर आर वेरियस ब्रांचेस ऑफ हरिजन सेवक संघ अक्रॉस द इंडिया. सो वन ऑफ देयर वर्क इज टू प्रमोट एजुकेशन अमंग द हरिजन्स. सो फॉर दैट कस्तूरबा बालिका विद्यालयस वर एस्टेब्लिश्ड, राइट. So that way we should have idea about this Harijan Sevak Sangh. Another thing is that founding president of this Harijan Sevak Sangh was G.D. Birla, right? So you can write this, and secretary was Amritlal Thakkar. So this extra information you can write down, because to establish any organization we need some funds. So G.D. Birla provided the fund. So founding president, G.D. Birla. G.D. Birla, right? And secretary Amitabh Thakkar, right? Amritlal Thakkar.
So again, during this time, he took the efforts like that, open the public access, public areas to the Harijans, let them allow to enter into the temples. They should have a common gathering with the other caste people, right? So the idea is to remove or to overcome the divisions within the society, right? So this was the whole idea. Okay, so this is about the Harijan Sevak Sangh. If you find any other detail, you can just note it down for your own understanding, right? Now, last news which I will discuss before ending it up about the war crimes. So I hope many of you are keep listening about war crimes. War crime, right? This war crime keep appearing in the newspaper every now and then. है ना, वॉर क्राइम आप सबको सुन रहे होगे, रशिया यूक्रेन वॉर कंटेक्स्ट है, आता ही रहता है न्यूज में, राइट? ओके, यस, अम्बेडकर जी साइड हिमालयन बेंडर, ठीक है, जी प्रतुष। हाँ, अभी वॉर क्राइम पे आओ, वॉर क्राइम पे मेरा जवाब दो, चलो, राइट? अब बताइए, येट दिस वॉर क्राइम इज डिफाइंड बाय विच स्टैट्यूट? वॉर क्राइम की डेफिनेशन क्या है, बाय द वे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वॉर क्राइम एंड विच स्टैट्यूट, विच लॉ डिफाइन दिस वॉर क्राइम? हाँ, ये तो सुना ही होगा। यस, ये तो, अगर ये भी नहीं सुना होगा तो फिर क्या सुना होगा? ओके, सो नाउ माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वॉर क्राइम? बाय विच एक्ट दिस वॉर क्राइम इज डिफाइंड? रिसेंटली इन बच्चा यूक्रेन, यस। वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट, नहीं, वायलेशन ह्यूमन राइट नहीं है। और बताइए, और कहाँ पे डिफाइन है वॉर क्राइम? किस एक्ट के तहत, किस इंटरनेशनल लॉ के तहत ये डिफाइन है जी? लेट मी चेक, किसने ये जद्दोहद की है इसको पता करने की। कौन सा कलर इस्तेमाल किया जाए अब? ये वाला। कलर का बड़ा चक्कर है। यस, बताइए, कोशिश की कि नहीं की, पहले ये बताओ। ऐसे पूछ देगा यूपीएससी, मजाक कर देगा आप लोगों के साथ। फिर आप सोचोगे यार ये तो इतना सुना है हमने, और जो ज़्यादा सुना होता है वही चीज़ कई बार डिफिकल्ट हो जाती है। द कॉमन टर्म्स विच कीप अपीयरिंग, वैष्णव सिंह सर ऑलवेज पिक अप समथिंग विच वी हैव स्केयर और नो आइडिया ऑफ। हाँ, वॉर ऑन कॉमन पीपल, यही तो देखो यूपीएससी है ना, यही तो करती है कि हमारी आंखों के सामने होता है फिर भी हम देख नहीं पाते, भगवान की तरह क्वेश्चन प्रकट कर देती है। फिर हमें एग्जाम में आता, अरे ये भी था क्या? ह्यूमैनिटी तो मतलब ऐसा बोल रहे हैं, मतलब ह्यूमैनिटी तो है ही यार, सब कुछ ह्यूमैनिटी तो ही है। ये क्लास भी ह्यूमैनिटी का ही पार्ट है। वृंदा ने कुछ कुछ सही दिमाग लगाया है, बट अभी एग्जैक्टली नहीं आया है, चलो फिर भी ठीक है। प्रोतुष, यूएन कन्वेंशन ऑन कोवेनेंट ऑफ सिविक एंड पॉलिटिकल राइट, अरे नो कोशिश सर, ठीक है, चलो। इट इज बेस्ड ऑन रोम स्टैट्यूट। रोम स्टैट्यूट सुना है आपने? इट इज डिफाइंड बाय रोम स्टैट्यूट। अब रोम स्टैट्यूट क्या है जी? ये तो शायद सुना होगा। इट इज डिफाइंड बाय रोम स्टैट्यूट and this Rome statute derived its definition from, जो वृंदा ने बोला, derived its definition from जिनेवा कन्वेंशन 1949, जिनेवा कन्वेंशन 1949, बट नॉट बेस्ड ऑन दिस ओनली। इससे बस ड्राइव किया है, इसको यूज नहीं किया है। इन जिनेवा कन्वेंशन इट इज नॉट डिफाइंड। इन जिनेवा कन्वेंशन ओनली टाइप्स ऑफ क्राइम इज मेंशन्ड। जिनेवा कन्वेंशन डील्स विद द मैनर टू डील विद वार लाइक सिचुएशन, कि कैसे प्रिजनर्स को हैंडल करना है, कैसे एनिमीज के संग पेश आना है, कैसे उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। सो वॉर को कैसे डील करना है, वॉर लाइक सिचुएशन को, और उसमें जो भी इश्यूज हैं उनको लिमिट कैसे करना है, टू रिड्यूस इट्स इम्पैक्ट, राइट? बट टू टेक अ क्लू फ्रॉम दिस जिनेवा कन्वेंशन, दिस रोम स्टैच्यू, एंड रोम स्टैच्यू ऑफ व्हाट? इंटरनेशनल, बताइए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट।
रोम स्टैच्यू इज लिंक टू इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो ये भी कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, दैट रोम स्टैच्यू इज लिंक्ड विद व्हाट, इट इज लिंक्ड विद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, राइट। सो अब इसकी डेफिनेशन क्या है वॉर क्राइम की? इट सेड इट रेफर्स टू द सीरियस वायलेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉज। डेफिनेशन क्या है वॉर क्राइम की? सीरियस वायलेशन ऑफ, सीरियस वायलेशन of the humanitarian laws, not just one law, number of humanitarian laws with respect to civilians, with respect to refugees, with respect to the prisoner of war, right? Serious violation of the humanitarian laws, humanitarian laws during the domestic conflict, during the domestic conflict, domestic conflicts, or war between two or more state, or war between two or more state, or between states, or war between states लिख लो सीधा सा। So it is not just war between two states, even your domestic conflict, if there is violation of humanitarian laws even during your domestic conflict, that also comprises the war crime, that also comprises the war crime, right? अरे ऐसा मत करो आशीष सिंह सर, मेरा तो कॉन्फिडेंस लो यार। अरे कॉन्फिडेंस लो करने के लिए थोड़ी क्लास हो रही है, क्लास हो रही है आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का और आप लोगों को एक रास्ता बताने का। ये सब चीजें भी याद रखनी, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, सरप्राइजिंग बहुत ज्यादा। एट द सेम टाइम टू गिव यू एन टच, पूछ लेगा कुछ भी कि रोम स्टैच्यू किससे लिंक्ड है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट किसको डील करती है, जेनेवा कन्वेंशन क्या है, राइट? इसको नेगेटिव नहीं लेना है कुछ। अरे ऐसा थोड़ी हमको सब कुछ आता है, मुझे भी थोड़ी आता है सब कुछ, मैं भी तो आपको पढ़ा पढ़ा के ही सीख रहा हूँ। तो ऐसा कुछ किसी को कुछ नहीं आता, सब यहीं आके सीखते हैं, राइट? सो लो करना नहीं, कॉन्फिडेंस बिल्कुल। सीखने आए हम लोग क्लास में, है ना, सबको कुछ नहीं आता, सबको बस थोड़ा थोड़ा आता है। बट यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ उसको ध्यान में रखना है ना, यहाँ से सीख के जाना है। इसके लिए ये नहीं लेना कि अरे ये कैसे नहीं आया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो पूछा जा सकता है, ये हमें पता भी होना चाहिए एज ए स्टूडेंट ऑफ UPSC, that what is the criteria to define ki that what is war crime, on what parameters we decide, or on what principles we decided what leads to war crimes, right? Okay, so let's discuss the principles, that criteria of war crimes, on what principles. There are 3 principles, okay? So these war crimes are criteria for डिसाइडिंग वॉर क्राइम। क्राइटेरिया लिख देते हैं पहले, क्राइटेरिया ऑफ वॉर क्राइम्स, क्राइटेरिया ऑफ वॉर क्राइम्स। कब बोलेंगे हम वॉर क्राइम को? सो 3 प्रिंसिपल्स आर देयर, सो देयर आर 3 प्रिंसिपल्स। on the basis, on the violation of these 3 principles, you can categorize any crime as war crime. So 3 principles क्या है? ये principles देख लेते हैं। So first is distinction, first is distinction, distinction. Second is proportionality, second is proportionality, proportionality, and I will explain you one by one, right? Proportionality. And last is precaution, last is precaution. So first is distinction. I think this is not difficult to remember and understand. ध्यान से सुनना, जो मैं कहूँगा 2 मिनट के लिए, ये आप फिर इसको आसानी से याद कर लो, कभी भूलोगे नहीं, राइट? बाकी रविवार सर आज बहुत कुछ न्यू थिंग्स के बारे में मालूम हुआ, हाँ वही इसीलिए तो क्लास
कर रहे हैं ना हम लोग कि नया जानने के लिए। अब आप जो जानोगे मैं वही बोलूंगा, आप भी बोलोगे कि विनीत सर को तो हमसे भी ज्यादा नहीं आता ना, मतलब उतना ही आता है इतना हमें आता है, फिर आप क्यों करोगे? दैट इज देयर। बट यस, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्लास इज टू मेक यू लर्न न्यू थिंग्स। यही ऑब्जेक्टिव है कि आपको कुछ सिखाया जाए विद रिस्पेक्ट टू द एग्जाम, राइट? So this is good that you people are realizing that the classes are very important with respect to learning new things. Good. सर आपकी क्लास अटेंड कर कुछ नया लर्न करने को मिलता है। अच्छा, धन्यवाद भाई योगेश, धन्यवाद। चलिए, तो अभी इस पे आते हैं, डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन में अगर आप देखोगे तो दैट यू दिस आर्मी और द स्टेट शुड क्लियरली डिस्टिंग बिटवीन द सिविलियंस एंड द टारगेट और द एनिमीज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपना हॉविट्जर लिया या आपने अपनी तोप ली और सबको उड़ाते चले गए रास्ते में। नो, यू शुड नो कि मेरा एनिमी टारगेट कहां पर है। इन द नेम ऑफ एनिमी यू शुड नॉट टारगेट सिविलियंस। सो देयर शुड बी द डिस्टिंक्शन, भैया ये सिविलियंस हैं, ये एनिमीज हैं, या ये टारगेट है। एंड टारगेट मींस मिलिट्री इंस्टॉलेशन। मान लो इंडिया पाकिस्तान में युद्ध हो जाए तो ऐसा थोड़ी पूरे लाहौर कराची को रौंद देंगे, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के जो इंपॉर्टेंट एरियाज है, एयरफोर्स है, जब भी आप देखिए इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ तो ऐसे सिविलियंस पर अटैक नहीं किया गया, बिकॉज ऑफ जिनेवा कन्वेंशन एंड बिकॉज ऑफ दिस वॉर क्राइम ट्रीटी। इंडिया इज ऑल्सो पार्टी ऑफ जिनेवा कन्वेंशन। तो हुआ क्या कि मिलिट्री इंस्टॉलेशन को या जो बैटलफील्ड है वहीं तक वॉर रहेगा। ऐसा नहीं कि कहीं भी बम फेंक दिया मन में आया वहां पे, ऐसा नहीं, लिमिटेड स्ट्राइक। सो दैट डिस्टिंक्शन शुड बी देयर, सिविलियन वर्सेस टारगेट, राइट? तो आपको इतना पता होना चाहिए कि सिविलियन वर्सेस टारगेट, इसमें आपको डिफरेंस करना आना चाहिए, सिविलियन वर्सेस योर टारगेट्स। तो आपको डिस्टिंक्शन होना चाहिए, आपके टारगेट्स क्या हैं, डिफाइन होने चाहिए टारगेट्स आपके। प्रोपोर्शनैलिटी का क्या मतलब है? प्रोपोर्शनैलिटी का यहाँ पे मतलब है कि मान लीजिए आप सपोज पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने मान लीजिए इंडिया का एक जवान मारा। देखो मूवी में आप कुछ भी बोल दो, पॉलिटिक्स में आप कुछ भी बोल दो कि वो हमारा एक जवान का सर ले आएंगे, हम 10 के लाएंगे, वो ठीक है फोर्स के। लेकिन मान लीजिए कि वहां से कुछ अटैक हुआ, आतंकवादी हमला हुआ या अटैक हुआ, जो भी है। अब इंडिया डिसाइड किया हमें पाकिस्तान में वॉर करना है, बहुत ज्यादा आतंकवाद हो गया, अभी लिमिट क्रॉस हो गई। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि उसने हमारा एक सैनिक मारा तो हम पूरा पाकिस्तान उड़ा दें या हम पूरा लाहौर उड़ा दें, या कहीं भी कुछ होता है तो हम पूरी सिटी को या कंट्री को वाइप आउट कर दें। तो प्रोपोर्शनलिटी में क्या होना चाहिए, अगर उसने फोर्स यूज किया तो हमारा फोर्स या हमारा जो रिटेलिएशन है, जो रिस्पॉन्स है, इट शुड बी इन प्रोपोर्शन विद द फोर्स अप्लाइड बाय द एनिमी साइड और द अपोनेंट। उस प्रोपोर्शन होना चाहिए। ये नहीं चाहिए कि आपने उसने सपोज वहां से ब्रह्मोस मारा या वहां से उसने कोई पाकिस्तानी कौन सी मिसाइल है, मैं तो नाम भी याद नहीं आ रहा, पाकिस्तानी मिसाइल क्या थी, कुछ तो अजीब सी रेशमा है कि ऐसी कुछ मिसाइल थी। एक तो जहांगीर भी शायद कोई एक मिसाइल थी, कुछ दिन पहले, बहुत पहले पढ़ी थी मैंने, जहांगीर थी, पता नहीं क्या थी। तो वो मिसाइल मान लो उन्होंने वहां से मार दी और हमने बदले में यहाँ से एटम बम फेंक दिया, तो ये क्या हो गया, डिसप्रपोर्शन। तो वो प्रोपोर्शनलिटी का ध्यान रखना है, राइट? दैट थिंग इज देयर। सो प्रोपोर्शनलिटी विद रिस्पेक्ट टू द यूज ऑफ फोर्स, यूज ऑफ फोर्स शुड बी इन प्रोपोर्शन, यूज ऑफ फोर्स शुड बी इन प्रोपोर्शन। ऐसा नहीं होने, हाँ शाहीन, अब मुझे याद आ गया, शाहीन मिसाइल है, हाँ, यूज ऑफ फोर्स शुड बी इन प्रोपोर्शन। तो पाकिस्तान ने मान लो वहां से शाहीन मिसाइल फेंकी और आपने क्या किया, यहाँ से एटम बम फेंक दिया, तो दिस इज अगेन वॉर क्राइम, कि आपने वॉर की जो संधि है उसको तोड़ा, राइट? इस तरह से प्रिकॉशन में अगेन जब भी वॉर होगा तो आपको कोशिश ये करनी है कि जो नॉन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनको डैमेज कम से कम हो। जैसे आप देखो अभी रशियन आर्मी जो मार्च कर रही है वो प्रिकॉशन ले रही है, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ पुतिन कि हम स्लो इसलिए मूव कर रहे हैं ताकि सिविलियंस को दिक्कत ना हो, सिविलियंस को कम से कम दिक्कत हो, राइट? या उन पे स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, इनको डैमेज ना किए, प्रिकॉशन लो, प्रिकॉशन। सो दैट इज द, अगर आप इनमें से इन प्रिंसिपल्स को वायलेट करते हो देन यू आर कमिटिंग द वॉर क्राइम्स, देन यू आर कमिटिंग द वॉर क्राइम्स। यस रवि, बाबर, या बाबर भी एक है, एग्जैक्टली। सो दिस इज द थिंग, राइट? सो दिस थिंग इज क्लियर कि क्या प्रिंसिपल्स के बेसिस पे वॉर क्राइम डिसाइड किए जाते हैं, क्योंकि वॉर क्राइम न्यूज में बहुत ज्यादा है, कभी भी पूछ सकता है आपसे वॉर क्राइम क्या है या वॉर क्राइम्स क्या, या इवन वॉर क्राइम आपको पता होना चाहिए। मान लो अभी मेंस में क्वेश्चन आ जाए, एटलीस्ट यू पीपल कैन स्टार्ट एन इंट्रो कि वॉर क्राइम आर दोज क्राइम्स व्हिच आर कमिटेड अगेंस्ट द ह्यूमैनिटेरियन लॉज बाय द ड्यूरिंग द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और ड्यूरिंग वॉर्स,
एज पर द रोम स्टैच्यूट दे आर डिफाइंड बाय। तो आप एक इंट्रो तो लिख सकते हो कम से कम, इस तरह से। अब इसमें एक इश्यू है कि इसमें एक एक्सेप्शन है दैट इफ मिलिट्री जस्टिफाई, फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करता है और ड्यूरिंग दैट अटैक इंडिया ने मान लीजिए सिविलियन एरिया को टारगेट किया, मीन्स नॉट इंटेंशनली बट नुकसान हुआ, बट इंडिया कैन जस्टिफाई, इंडियन मिलिट्री कैन से कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी और इन द एज टेररिस्ट होल्डिंग अप दैट बिल्डिंग, हमें बिल्डिंग उड़ानी पड़ी, हम क्या करें? सो समटाइम दिस इज अ ग्रे एरिया, दिस इज अ ग्रे एरिया अंडर दिस प्रोविजन, कि कई बार मिलिट्री वाले क्या करते हैं या मीन्स आर्मीज क्या करती है जो वॉर कर रही होती है, वो दे जस्टिफाई देयर एक्शन that okay because the terrorists were holding up that particular building, suppose bank, suppose hospital or something, so we decided to blow up that building. As a result, what happens, they just pass on the scrutiny or just escape from the scrutiny of these war crimes. So this is the just one gray area, keep this thing in your mind. Okay, now I have another question to you, then we will end the class. I have a question with respect to that, how you differentiate war crime versus crime against humanity. war crime ये तो आता रहता है, वर्सेस एक और टर्म आता है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इसमें क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉर क्राइम एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी? क्या डिफरेंस है जी, बताइए। क्या डिफरेंस है? हाँ, यस रवि, लाइक मेनी टाइम्स अमेरिका यूज दिस टैक्टिक्स, करेक्ट, यस, गुड। नाउ टेल मी दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉर क्राइम वर्सेस क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी? क्या है जी अंतर? लेजर सिंह सर, आप इंस्टीट्यूट कितने बजे आते हो? मुझे तो मिले नहीं। ओके, आप जब भी आओ तो मुझे कॉल करके आओ या मुझे मेंशन करके आओ कि सर मैं कल आने वाला हूँ आपसे मिलने, या मैं आने वाली हूँ आपसे मिलने, देन आई कैन मीट यू। एंड आप मुझसे नहीं मिल पाए, सो सॉरी फॉर देट, मुझे आइडिया नहीं था, राइट, बट यू कैन मैसेज मी, है ना, यू कैन मैसेज मी। हाँ, तो क्वेश्चन, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी मीन्स रेप, और नहीं, मैं ये नहीं पूछा मीन क्या है, डिफरेंस क्या है, कब हम बोलेंगे किसी क्राइम को भी वो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, और कब हम बोलेंगे कि वो क्राइम ड्यूरिंग वॉर टाइम है, मीन्स वॉर क्राइम है। ये क्वेश्चन है मेरा, दिस इज माय क्वेश्चन। एंड जब तक आप क्वेश्चन का आंसर दो, बाकी ये है कि कनेक्ट करना चाहो आप कभी, चेंज है इस वाला अपना चैनल है, उससे कनेक्ट कर सकते हो, आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो। अनदर है CSC @ विनीत सर, इस पर भी मैसेज डाल सकते हो अगर मुझसे डायरेक्ट बात करनी है तो। जिन लोगों को पता है वो इस पर कर लेते हैं, तो कभी भी है तो टीम मीन्स एज ए इंस्टीट्यूट आप कर सकते हो चेंज आई इस वाले पे, वहाँ भी मैं आपको मिल जाऊँगा, यहाँ भी मिल जाऊँगा, यहाँ आप डायरेक्ट मैं मिलूँगा, राइट। तो जब भी कोई आता है आप में से मिलने या बतियाने, तो यहाँ पे आइए, बताइए। यस, हाँ, तो क्वेश्चन का आंसर बताइए जी कि वार क्राइम और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में क्या अंतर है? हाँ, प्रोतुष का है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी डन विद इन द कंट्री एंड वॉर क्राइम्स डन बाय आउटसाइड कंट्री एज वेल। अच्छा, चलो, कोशिश अच्छी है प्रत्युष की, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कोशिश है, नाइस, बहुत अच्छा। हाँ, अभी आया है वैष्णवी का रिप्लाई, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी डज नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व वार, यस, वेरी गुड, इट कुड हैपन इन इंटरनल इंस्टिट्यूट एज वेल, यस, वेरी गुड। चलो, काफी हद तक अच्छी अप्रोच है, गुड, नाइस, अच्छी कोशिश है। अब मैं बताता हूँ आपको कि मोर और लेस प्रत्युष वैष्णवी का अप्रोच ठीक है। सी, वॉर क्राइम तो हमने देखा ही अभी, वॉर क्राइम की डेफिनेशन में क्या लिखी, ड्यूरिंग इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, राइट, और वॉर विद द स्टेट, वायलेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन लॉज, ये हो गया वॉर या कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे। बट दिस क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इज ड्यूरिंग द पीस टाइम, ड्यूरिंग द पीस टाइम, और
यूनिलेटरल एग्रेशन बाय मिलिट्री अगेंस्ट द नॉन आर्म्ड अनआर्म्ड पीपल। और मान लो कोई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहा है और अगर आर्मी गई उस पर गोलियां चला दी, जैसे चाइना में, वेरी गुड एग्जांपल इज हांगकांग। हांगकांग में मान लो अगर प्रोटेस्ट हो रहा है एंड चाइनीज आर्मी, चाइनीज पुलिस इज कमिटिंग क्राइम अगेंस्ट द पीपल, मीन्स दे आर यूजिंग बुलेट, killing them, it is crime against humanity. So during peace time, so this is during peace time, इसका हमने देख ही लिया है, it is during peace time. So these are the certain basic things, right? So peace time में ये होता है, and कब होता है, या peace time और unilateral aggression, unilateral aggression by the army towards a group, unilateral aggression, unilateral aggression towards a unarmed group, towards unarmed group, unarmed group, ठीक है? यस, ठीक। अच्छा, वृंदा का कमेंट आया, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी मींस heinous crime by individual or group in normal times, yes, and war crimes are, yes, very good वृंदा का सही है। इधर वॉर टाइम के टाइम पर वॉर क्राइम, यस, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी इन नॉर्मल टाइम, यस, बिल्कुल सही बात। हाँ, टीएमएन स्क्वायर इंसिडेंट इन चाइना, यस रवि, बढ़िया एग्जांपल है, सही है, गुड, करेक्ट, सही है। तो वही चीज़ है। सो दीज आर द सर्टेन बेसिक्स, कब क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी होगा, कब वॉर क्राइम होगा, क्योंकि जब आप मेंस के आंसर लिखते हो ना, तो ये वर्ड्स का केयरफुल सिलेक्शन होना भी जरूरी है, राइट? इट शोज योर क्लैरिटी विद रिस्पेक्ट टू द कंसेप्ट, कि क्या क्लैरिटी आपकी है। एंड इन दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन आंसर राइटिंग ऑल्सो एंड इन प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑल्सो, कि कहाँ पे आपको जिनेवा कन्वेंशन यूज करना है, कहाँ पे आपको रोम स्टैट्यूट को मेंशन करना है, कहाँ पे आप बेसिक डेफिनेशन के साथ भी आंसर स्टार्ट कर सकते हो, राइट? ऑल दीज थिंग्स आर देयर। सो आई एम स्टॉपिंग हियर, वी विल कवर some more news in the next session, right? So I hope you enjoyed it and you learned many new things, right? So keep learning and keep going. So thank you all of you, good night, we'll meet in the next session. Any feedback, anything, you can send me here for any feedback, anything, right? Or you can drop in the comment box as well. So thank you everyone, good night, take care.